Principal sir, may I start, sir? Yes, Bhushan sir, start over there. But just before starting, I would like to welcome the officials from the COE Patna. Few of the members from the COE Patna is over here. I think Tarun sir is over there. Tarun sir, are you over there? Tarun sir? हाँ Yes, जी, sir. आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज की सीओई हेड पटना श्री तरुण कुमार जी हम लोग के साथ मीटिंग में उपस्थित हैं एक छोटे से विद्यालय की इन हाउस ट्रेनिंग में. तरुण सर, आपके आशीर्वाद के साथ हम परमिशन चाहेंगे कि हमारे रिसोर्स पर्सन मीटिंग स्टार्ट करें. ठीक है. ऑल द बेस्ट, आप स्टार्ट करें. ठीक है, मैं थोड़े टाइम के लिए रहूंगा, हो सकता है बीच में और कोई रहे. ठीक है, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गॉड ब्लेस. आपका आशीर्वाद, आप आ गए हैं, आपका आशीर्वाद है ये काफी हम लोग के लिए. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. भूषण सर, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन प्लीज. Sure, sir. So a very warm welcome, especially to Mr. Tarun sir, who joined, as a principal sir said, he arranged a time from his busy schedule, and all the educators. This is Braj Bhushan, PGT of Computer Science, and I have working since last 18 years as a computer teacher. And today I got another chance to demonstrate or share my viewpoint over the cybersecurity and ethics. Principal sir, before starting, just I would like to I'm sharing a link. I'm sharing a link in a chat box, sir. And all the educators are requested kindly click on the link. There is a 2 questions. Kindly click on the link. Just, it's a normal question. How do you describe learning in 3 words? Principal sir, if you can participate, it will be great pleasure for us. Just click on the link which I have given into chat box. Explore knowledge, gain knowledge, share knowledge. Just be genuinely whatever you think about the learning, understanding, practice, implementation. Someone said it's a song. Process, involve, explore, and almost all the words correlated with the topic which I asked, describe the meaning of learning. But very few educators have been participated. I requested to all the participants just to enter what your view, whatever you think about, just enter here. Just one thing I would like to clear, don't worry, no name of any participant will be displaying on the screen. Even I will not know who put which argument, which comment, which message. And you can see on your screen. There is a second question. Kindly vote. How often do you use online platform for shopping? Actually, the reason behind, today I'm going to explain something about the cyber security and the ethics of cyber security. What we have to do when we are browsing internet. Weekly, okay? Mohit sir, you are quite active on the online platform for the shopping.
I'm waiting for your answer. Even our honorable principal sir is quite active. When I interact with Summit often, twice a week, and one educator said never. Quite possible. It doesn't mean we all must have to use the online platform for the shopping. Almost 25 educators in this training session, and I'm getting the answer from few educators. As usual, rarely seldom. Okay. So just I asked two different questions. Not a question, just two views. Just I would like to know about the learning, what you think about the learning. As all of us heard a well-known proverb, at least I heard since my childhood. Education has completed, education can be completed, but learning is a lifelong process. When I was child, I thought must be an idiot make this fridge. But now the day, I am strongly agree with the statement. Learning is a long life process. Am I completely audible to everyone, sir? Am I audible, sir? Audible. Okay, sir. Now, as we are surrounded, now the day, we are surrounded by the activities which is never possible without the internet services. Actually, we are addicted of this service, particularly in our education and a commerce line. I mean to say commercial purpose. So today we are going to understand the habits. Today we will going to understand the meaning of e-world, what we should do and what we should not do, what thing we should care and what thing we should avoid. So welcome to the citizenship of the e-world. The meaning of a citizenship. Just I equalize it with the character. The meaning of a character. Character is what you do, I do, everyone do when no one is watching. That is the character. If I wish someone in front of him, can't say he's a good person and he has a good character. When I praise someone behind him or her, you can say the person has a good character. That's why I equalize the word. Citizenship is equal to character, and let us move as a citizen in an e-world. So what are the digital characteristics? So I give a word, digital citizenship, the responsible use of technology, including ethics, etiquettes, security, and the responsibility.
Normally, just I would like to start from the word ethic. First, I would like to introduce the meaning of the ethic. Actually, the moral conduct of a behavior is normally known as a ethics in our general life, like a standard of right and wrong behavior, our personal integrity, the basic trust and a cooperation in a relationship. That is the ethic in a general life. And what is the digital ethics? Positively communicate, share, and contribute to society. It means we must care at the time of sharing of information. We should share the information text just to contribute strong to the society, to make the society strong. Use in a respectful manner. The meaning of a respectful manner: never use the username password of your family member, because easily we can know the username and a password of a family member. Try to keep your own data safe and try to keep the data safe of your colleagues also. Always use the courtesy in a communication, like when we are sending a mail. There must be the subject line, but in few mails you can see their subject line is completely in a capital letter. It distracts the user. So use in a proper in a sentence way. Avoid harming others. The meaning of harming others: never spare the images of anyone without their consent. Never spread the gossip. Never spread the viruses. Never send the threat virus to any person. Share the network resources. The meaning of a shared network resources, like in our school or any organization provides the good bandwidth speed with the router and the Wi-Fi. Or normally, we started to download the large files for our personal use. Just try to avoid this kind of thing. We should share the network resources, but just for the work. And when we download the large file, it takes a speed of bandwidth. Be honest and trustworthy at the time of internet surfing. Honor property rights and the copyrights. The word meaning of a copyright and property right, I will come later. And give proper credit for the intellectual property. All the terms I will explain in next slides. Just all of us must have to ask one question to us: am I aware of other when I use technology? If we get the answer yes, then at least we are a good person for the browsing. And the meaning of the digital etiquettes: the conduct of the protocol, the set of rules. But it is very difficult to decide sometimes which we have to do and what we have not to do during the browsing of internet. User need to realize how their use of technology affect others. I am giving an example. Sometimes when we are browsing over any social media and we like some photographs, we like some video, a tempted video, a tempted photograph, अनजाने में कर दिया हमने like. Now it will be posted on my wall, और ये मेरे दोस्तों के पास भी गया. That photo was tempted. The meaning of tempted, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर रखी थी.
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के पहले वी मस्ट केयर कि हमारा एक छोटा सा भी शेयर किसी को मेंटली परेशान कर सकता है। Digital ethics has 4 primary issues. First one is privacy, accuracy, property, and the access. The meaning of privacy: responsibility to protect data about individuals. Not only we should protect our own data, we should have to protect our organizational data also. And that is our responsibility to share any accurate factual fact or factual data over the internet. So before sharing or before sending any factual, any fact, any figure, any digit, one should verify. Generally, we use an application or a software unknowingly that a person who are selling me has a license or not, and why we will bother. But we should bother. We should bother just to save someone copyright and the intellectual right of property. The meaning of access: responsibility of data collector to control access and determine what information a person has the right to obtain about others and how the information can be used. Until and unless we are not responsible for the data collection and the sharing of data, अनजाने में हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। Just I read a question and I will give the answer also. कई बार होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी के साथ और अचानक फोन आता है और फोन लगा लेते हैं। पर्सनली मैंने क्वेश्चन डाला था कि क्या ऐसा करना चाहिए? द आंसर इज नो। इवन should a student use text message to send message during the class? No, not at all. These are the part of the cyber ethics. That's why I am sending in all this. The meaning of the digital etiquette in communication. If just ask to you yourself कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू ईमेल, थ्रू एनी IM सॉफ्टवेयर, instant messaging software like WhatsApp, Instagram, or any social media platform, when you are using any social media platform, are you completely aware and known about the software or the application? If yes, then you can use. If no, you must know, you must learn before use, because the digital communication is nothing, just exchange of the data on internet, over the internet. And a person who are become a digital citizen must aware about the technology, understand the rules and regulations of the digital communication. The meaning of a digital security: how we can protect ourselves, how we can protect our data, taking necessary precaution from the save our data from the hackers, save our software from the piracy. This safeguard must be care to use when we are using this platform.
I asked a question basically in beginning, in ice breaking moment. नॉर्मली कितनी बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द डिजिटल कॉमर्स. एंड बिफोर using this platform, we must aware about the digital platform. I would like to give an example of and recently it was happened, not recently, I think 1 year back. CM of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, उनकी बेटी ने घर के एक सोफे को OLX के पोर्टल पे डाल दिया, उसकी तस्वीर खींचकर, जस्ट टू सेल. उनके पास एक फोन आया, उन्होंने प्राइस कोट कर रखा था 35,000 का. फोन आया कि मुझे फर्नीचर पसंद है, उठाऊंगा, लूंगा मैं, और तत्काल प्रभाव से मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, 25,000 रुपए मैं आपको जब फर्नीचर उठाऊंगा तब दूंगा. उसके बाद उस बंदे ने उनसे उनका फोन नंबर लिया. फोन नंबर वो लिया जो कि रजिस्टर्ड था पहले से गूगल पे के ऊपर, जीपे के ऊपर. शी वॉज ऑन द फोन लाइन, उनकी बच्ची फोन पे ही थी. बंदे ने कहा कि देखिए मैंने आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया है, जस्ट एंटर योर यूपीआई पिन एंड चेक योर अमाउंट. शी डिड. अब उस व्यक्ति ने पेमेंट सेंड नहीं किया था, बल्कि रिक्वेस्ट डाल दी थी 10,000 रिक्वेस्ट मोड में. बच्ची ने रिक्वेस्ट मोड एक्सेप्ट कर लिया, अपना यूपीआई पिन डाला और 10,000 रुपए इनके अकाउंट से उनके अकाउंट में चला गया. वो पकड़ा गया क्योंकि शी वॉज द डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर. नॉर्मली ये फ्रॉड बड़ा आम हो गया है, इतना आम हो चुका है, और अक्सर लोग ठगे जाने के बाद बताते नहीं, जिस कारण से भी ना बताए. मेरे कहने का सिर्फ यही पर्पस है कि डिजिटल कॉमर्स के समय हम उस प्लेटफॉर्म को भली भांति जान लें, और उस प्लेटफॉर्म पे जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उनका ख्याल रखें. जैसे नेवर शेयर योर एनी ओटीपी विद एनीवन. पहला, नेवर यूज योर यूपीआई पिन जस्ट टू check the balance. When you or we get any link, हमें अपना बैलेंस चेक करना है, हमें किसी लिंक को टच करके उसके बाद तो जाने की आवश्यकता ही नहीं. इससे भी ज्यादा आज के डेट में जो डेटा कलेक्शन के लिए ये स्कैम चलता है, अचानक से मैसेज आता है कि जस्ट गिव द आंसर ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड यू विल वोन द रिचार्ज ऑफ जियो ऑफ 599 और 699. और वो 5 क्वेश्चन भी जो होते हैं लगभग बच्चों जैसे होते हैं. हम देते हैं, वो हमें कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं 5 आदमी को शेयर कर दो, और अनजाने में हम 5 और लोगों को शेयर करते हैं. एक्चुअली वो जितने भी माइक्रोसाइट्स होते हैं उनका पर्पस एक ही होता है, जस्ट टू कलेक्ट द डेटा, एक्चुअल डेटा. क्योंकि इंसान को अपना फोन रिचार्ज करना होता है, दूसरे का नंबर डालेगा ही नहीं, वो अपना ही डालता है. एंड दे सेल आउट द डेटा. What safety precaution need to be placed when purchasing good? Electronic responsibility for action. So 2 kinds of things we should care. One is ethical and unethical responsibility. At the time of doing purchasing or selling or use of any electronic commerce. Ethical. As I said, ethical and unethical. The meaning of ethical, when particularly someone use the technology to chase someone, ethical कहलाते हैं. और जब कोई व्यक्ति उसी चीज का उपयोग
उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को हार्म पहुंचाने के लिए करता है, अनइथिकल कहलाता है। आज के डेट में दो और वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट्स। ऑल द इथिकल हैकर्स, all the technology experts who gives the support to the cyber cell, those guys are known as the white hat guys. And those people who use their knowledge and technology just to destroy the society, harm the people, known as a black hat or unethical. Now, how and which is known as a cyber crime or computer crime? What are the factors considered under a cyber crime? Number one is spreading the virus, sending the viruses, because viruses are the first object to steal your data from the system. वायरस का ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि वायरस जाके सिर्फ आपके फाइल को डिलीट करेगा ना, वो आपकी जाके बूट सेक्टर को बर्बाद कर देगा, सिस्टम ऑन नहीं होने देगा। वो स्टार्टिंग में हुआ करता था कि फाइल कभी सिस्टम में वायरस आया और उसने हमारे बूट सेक्टर को खराब कर दिया, हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। अब तो वो अंदर आता है, हमारी बैंकिंग डिटेल लेकर वापस निकल जाता है, या फिर हमारे हर एक एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट उसे भेज देता है जिसने उसे भेजा है, की लॉगर के साथ। और वैसे जो लिंक्स होते हैं उसको हम लोग बहुत जल्दी टच करते हैं, क्योंकि वो लिंक जो होता है एक मैसेज के साथ होता है जिस पर लिखा होता है कि यू हैव वोन 25 लाख रुपीज, जस्ट क्लिक हियर टू क्लेम। हम कर लेते हैं बड़े आसानी से। तो ऐसे भी किसी लिंक से बचे। उसी लिंक के फॉर्म में वर्म्स भी होते हैं, और ये थोड़े और बेहतर होते हैं। ये पहले आपके फोन या आपके सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाते हैं और फिर खुद की कॉपी बनाते हैं, और अगली बार जब आप अपने किसी भी वेल नोन को, किसी जानने वाले को कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी मेल भेज रहे हैं, वो उनके साथ जुड़ लेते हैं, अगले सिस्टम में ट्रांसमिट हो लेते हैं। और यहां मैंने अनजाने में किसी और के सिस्टम को भी अफेक्टेड कर दिया है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अफेक्टेड कर दिया है। इसके अलावा थेफ्ट, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनसाइड द कंप्यूटर क्राइम। थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर, थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, थेफ्ट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटर टाइप, सॉफ्टवेयर पैरासिस। The meaning of a piracy: when you use unauthorized, when you use any application in an unauthorized way without paying, if the software has any paid amount, if there is some price, view and manipulation of the unwanted mails, unwanted message is also considered as illegal offense in a cyber cell. Cyber cell categorize computer crime in a 3 way. First, the computer as a target. इसमें क्या करते हैं वो लोग? इसमें सबसे पहले वो हमारे सिस्टम पर अटैक करते हैं, और सिस्टम पे अटैक कोई फिजिकल अटैक नहीं होता है, इन अ फॉर्म ऑफ वायरस। और ये जो वायरस है ये कोई बायोलॉजिकल किस्म का वायरस नहीं होता, कोई इंसेक्ट नहीं होता, इट्स अ काइंड सिंपल प्रोग्राम, सेट ऑफ कोड्स ही होते हैं। इन्हें वायरस सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे सिस्टम में आने के बाद जिस काम को करते हैं, जो उनके काम करने का जो प्रोटोकॉल है वो डिस्ट्रक्शन का होता है, जैसे डेटा चोरी का, फाइल को या तो डिलीट करना या फाइल को बिल्कुल ब्लॉक कर देना, लॉक कर देना। और जब यूजर अपनी फाइल खोले
तो उसे कहे कि इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रैंसम वायरस कहा जाता है उन्हें। और आज से करीबन 2 साल पहले ये रैंसम वायरस जो था, इसने यूरोप के कई देशों को रुलाया था। जब सुबह वो व्यक्ति अपना लैपटॉप खोले, उसके लैपटॉप खोलने के पासवर्ड के लिए, लॉगिन करने के लिए उसे पेमेंट करना पड़ रहा था। दूसरा क्राइम, कंप्यूटर एज अ वेपन। और ये बड़ा ही ट्रेडिशनल किस्म का क्राइम बन गया है अब तो। कंप्यूटर का इस्तेमाल एकदम हथियार की तरह होता है। इसकी 2 वजह हैं। पहला, when we are doing any video call or audio call through the laptop or a desktop, it's very difficult to track the location, track the number. इवन नंबर की तो जरूरत भी नहीं होती। बिना किसी फोन नंबर के भी हम लोग बड़े आसानी से काम करते हैं, हमारा काम चलता है। और आज के डेट में सबसे अच्छे वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सॉरी, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी खांसी जैसी आ गई थी, तो और कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Now come to just I'm at the point, which kind of the risk and who are the persons who try to change us, who try to harm us. Basically, in a computer technology, in a computer world, we divided them into 3 parts, 3 categories. Number 1 is the hackers. एक्चुअली ये हैकर वर्ड पहले कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करता था। आज जो एक प्रकार से एब्यूजिंग वर्ड है, स्कॉल्डिंग वर्ड है, इट वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड फॉर द कंप्यूटर एंथुसियास्टिक, फॉर द कंप्यूटर वेल अंडरस्टैंडेबल पर्सन, वेल नॉलेजेबल पर्सन फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस। उन्हें ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं, बिना ऑथोरिटी के इलीगल तरीके से हमारे नेटवर्क में घुसते हैं, हमारे सिस्टम में घुसते हैं और मर्जी हमारा डेटा लेकर किसी को बेच दे, मिसयूज करे, सब कुछ। बट हैकर्स आर क्वाइट साउंडफुल नॉलेज, हैज अ क्वाइट साउंडफुल नॉलेज। हैकर के पास नॉलेज बड़ा जबरदस्त होता है, टेक्निकली सपोर्ट बहुत बेहतर होता है। Another one, we categorize cybercrime categorized as a cracker. The meaning of a cracker, also someone who accesses a computer or a network illegally, but has the intent to destroy the data, stealing information. Crackers are more dangerous than the hackers. और तीसरे, जिन्हें आईटी की फील्ड में स्क्रिप्ट किडी कहा जाता है, वो बच्चे, वो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होता, वो प्री रिटन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं किसी सिस्टम का पासवर्ड तोड़ने के लिए। उन्हें स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। हैकर्स को अगर मैं डिफाइन करूं 4 लाइनों में, दे इन्वेंट आवर प्राइवेसी,
They destroyed the property in form of computer files or the record. वो इंजर्ड करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को, कई बार हमारे इंफॉर्मेशन को सेल आउट करते हैं, कई बार हमारे इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं. द मीनिंग ऑफ द पायरेट्स, स्टीलिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी क्रिएटिविटी को जो चोरी कर रहे, पायरेसी कहलाती है, करने वाले पायरेट्स कहलाते हैं. Even copy paste, it's also kind of a crime of plagiarism. It's a dishonest and unethical as the illegal thing. All of heard about the copyright law. The meaning of a copyright law in India, at least, we cannot use the 30-second, more than 30 seconds of any composed music. अगर करते हैं तो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं. अगर हम किसी साइट से क्लिप आर्ट को डाउनलोड करके उसके अंदर कोई अल्टरेशन करते हैं तो भी कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं. किसी की ऑडियो को भी अगर हम 10 सेकंड से अधिक के लिए यूज करते हैं, या किसी के क्रिएट किए हुए क्रिएटिविटी के टेक्स्ट को अगर 10% से अधिक का हम इस्तेमाल करते हैं. अब इनसे बचने का जो तरीका है मैं उस पर आ चुका हूं. हाउ वी कैन सिक्योर. अभी तक मैंने वो सारी चीजें बताई हैं जिनकी वजह से, जिन तरीकों से वो हमें हार्म करते हैं. अब उनसे बचने के जो तरीके मैं उस पर आ गया हूं, जिसे कि इनक्रिप्शन कहा जाता है. बेसिकली इनक्रिप्शन कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल कैरेक्टर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. It reads the data, the receipt must decrypt or into the readable form. So always use the encryption for your file. Encryption को अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर बता दूं, कुछ ऐसे भी आज के डेट में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स, इन दोनों के ऊपर जब ईमेल्स आते हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं और वो आपके आईडी में लॉगिन होने के बाद ही डिक्रिप्ट होते हैं. अगर किसी ने आपके सिस्टम को हैक कर रखा है, नेटवर्क के अंदर घुस रखा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो आसानी से तो आपके और हमारे डेटा को रीड नहीं कर पाएगा. दूसरा, आज के डेट में डिजिटल सिग्नेचर एक बढ़िया हथियार है हमारी सेफ्टी के लिए. वंस वी डू द डिजिटल सिग्नेचर तो हमारे हाथ के सिग्नेचर को नकल करना आसान है, बट डिजिटली जो सिग्नेचर हमने किया उसके हर एक बीट को रिकॉर्ड कर लेता है सिस्टम, नहीं कर पाता जल्दी कोई इसकी नकल. जब भी अपना यूजर नेम यूज करे, बनाए, पासवर्ड बनाए, कोशिश करें कि उसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और डिजिट विद द स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश एंड @ इनका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हैकर्स कुछ नहीं करते, दे यूज अ डिक्शनरी. वो यूजर के ब्रेन को पढ़ते हैं, उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. नाम क्या है, बर्थडे क्या है, इनके गाड़ी का नंबर क्या है, फोन का नंबर क्या है और इनके फैमिली मेंबर का बर्थडे क्या है, एंड दे जम्बल्ड द इंफॉर्मेशन टू हैक द अकाउंट. जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन ये डिजिटल सर्टिफिकेशन आज के डेट में आम हो गया है. डिजिटल सर्टिफिकेशन जो है ये गारंटी कर देता है कि ऑथराइज्ड ही है यूजर. ये वेबसाइट जो है लेजिमेट है, इट्स अ करेक्ट फ्रॉम द रूल, इट इज करेक्ट फ्रॉम द प्रोटोकॉल. और इंटरनेट यूज करते समय जो मेजर चीज का ख्याल रखे वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सिक्योरिटी होती है. अभी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बताने नहीं जा रहा है ताकि परेशान होंगे. मैं एक छोटा सा ये क्लिप दिखा रहा हूं, ये सॉरी गौर से जरा देखिए. जिस भी वेबसाइट के अंदर HTTPS लिखा होता है, S स्टैंड फॉर द सिक्योरिटी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. हमारे वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होगा, it will must be start from the HTTP or HTTPS. Try to avoid all those websites which start from HTTP.
जो भी HTTP से शुरू होते हैं उनसे थोड़ा बचे, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, और इतना तो हम ध्यान दे ही सकते हैं। दूसरा एक और पहचान होता है, उसी एड्रेस बार में आपको एक ताले की तस्वीर दिखाई देती है, लॉक दिखाई देता है। ये पहचान होती है हमारे लिए कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी काम कर रही है। वैसे वेबसाइट पे जाकर आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। हमारे इंटरनेट और नेटवर्क अटैक्स को इतने देर से मैं वही बता भी रहा हूं। नॉर्मली एक सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए उतने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं होती जितने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोग्राम किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क हैज अ हायर डिग्री ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, बिकॉज more than 1,000 and 10,000 users are in one network. I'm talking about the organizational network only. और जब ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं, दुनिया उसे इंटरनेट कहती है। तो हाई सिक्योरिटी लेवल सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर एंट्री पॉइंट्स बहुत है। इतने एंट्री पॉइंट्स है कि पूछिए, जितने फोन उतने एंट्री पॉइंट्स, जितने लैपटॉप उतने एंट्री पॉइंट्स। इसलिए इंटरनेट और नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। कुछ चीजों का ख्याल रखें। अपने ईमेल को भेजने के पहले भी ध्यान रखा करें, क्योंकि ईमेल की जो कॉपी होती है, जो हमने किसी को भेजा है, उसकी सिर्फ 2 कॉपी नहीं होती है, उसकी 3 से 4 कॉपीज होती हैं। पहला मेरी आईडी के अंदर है, दूसरा मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास है अगर मैंने जीमेल यूज किया है, और मैंने भेजा है याहू के ऊपर, याहू के यूजर को, तो फिर वो याहू के पास भी है, फिर उसकी एक कॉपी जाती है यूजर के पास। तो जब भी हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, पहला हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम इस चीज का ख्याल रखें, वी मस्ट यूज द सिक्योर प्लेटफॉर्म लाइक HTTPS and just send the required mail only with the limited words and required information only. Already I explained about the unauthorized access and authorized access. At last, just I would like to say something about the how we can prevent our account. Every account, all accounts almost have the username and password. Try to make your user ID uniquely combination, कैरेक्टर और नंबर का हो, पासवर्ड भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। और एक वर्ड जो अक्सर है पिछले कुछ दिनों से, मतलब 3-4 सालों से इंट्रोड्यूस हुआ था आईटी फील्ड में, कैप्चा। एक्चुअली कैप्चा स्टैंड फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। ये ट्यूरिंग टेस्ट हमारे एआई के आने के बाद हमारे हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाने लगा। ये जो कैप्चा हो है वो कंफर्म कर देता है, सॉफ्टवेयर को कंफर्म कर देता है कि जो काम कर रहा है यूजर, वो ना कोई प्री डिफाइंड प्रोग्राम है, मतलब रोबोट नहीं, वो कोई ड्रोन भी नहीं, वो एक ह्यूमन बीइंग है जो एंट्री कर रहा है, जो आईडी या तो खोल रहा है या आईडी को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। Last, in a cyber security, we leave some digital footprints, and that digital footprint can be collected by the digital scientist, which is known as a digital forensic. ये जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है, हम कहाँ छोड़ जाते हैं, कैसे छोड़ जाते हैं? हम छोड़ जाते हैं अपने कैश मेमोरी में। मैंने किसी को व्हाट्सएप पे कोई थ्रेटनिंग दे दी और मैंने अपना डिलीट कर दिया, चलिए मैंने उसका भी डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन, बट स्टिल द डेटा एग्जिस्ट एट द सर्वर ऑफ व्हाट्सएप और द सर्विस प्रोवाइडर, नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का जिसका भी हमने यूज किया था कम्युनिकेशन के लिए, वो डेटा वहां है।
हमने जब कनेक्ट किया था उसको, उस वक्त हमारे डिवाइस ने जो आईपी ऑब्टेन करा था वो उस आईपी का डेटा है, तो वो आईपी किस आईएसपी का था। तो डिजिटल फुटप्रिंट हमारा बहुत स्ट्रांग छूटता है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ सामने वाले की प्राइवेसी और उसकी भी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। थैंक यू। प्रिंसिपल सर। Yes, Bhushan sir, that was a very informative session given by you on the cyber security and ethics. Even we were not aware of what are the basic concepts of the cyber security ethics. We just used to click on the links, whatever you told, ki, haan, they are coming, you are getting 25 lakh, you will get 10,000. And what will happen? Our data get lost or our data go to the third party over there. So that was a very eye-opening session for all of us, so that we come to know ki, what are the drawbacks of these things and how we can be overcome from these issues. Ki, how the things can be managed over there and in which way we can be safe from the scope of the cyber safety over there. And I will highly appreciate that Bhushan sir, he has given a wonderful presentation through the PPT and he has used the digital techniques like Mentimeter. Our next session will be on the Sunday and Monday consecutively. Sunday will be under the resource person Ashutosh Kumar sir, and Monday will be Mukesh sir as a resource person. And Tarun sir on Sunday he will be over there. He has just texted me over there. Ki on Sunday he will give us a full-fledged time for the session. Once again, Bhushan sir, thank you for a wonderful session. I would like to request to share the attendance link so the participants can put their attendance. Thank you.